Good morning students, how are you? Now in next lecture 3rd, we will discuss the remaining questions of construction. Okay, so question is, let ABC be a right triangle in which AB equals 6 centimeter, BC equal 8 centimeter and angle B is the 90 degree. BD is the perpendicular from B on AC. This circle through BCD is drawn. Construct the tangent from A to this circle. So how we will construct the tangent on that circle? So for that we will follow step by step. Step first. In step first, what we will do? Firstly, we will construct a right angle triangle. Construct a right triangle. ABC in which angle B is 90 degree. So how we will draw? Firstly, we will draw here BC is equals to how many centimeter? 8 centimeter. At point B, we will make an angle 90 degree. We will make 90 degree angle. 90 degree. From that point B, we will open compass 6 centimeter. Then we will get the point A. That is 6 centimeter. Now we will join A to C. Right? After that, second is that BD is the perpendicular from B on AC. So we will draw the perpendicular from point B on AC. So how we will draw the perpendicular, students? Firstly, we will draw here a semicircle or circle. आपको क्या ड्रॉ करना है? एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है. For that we will draw the perpendicular bisector of BC. Step second, draw perpendicular bisector of BC which intersect BC at point M. Let that point is the M. Okay. Now step third. Now take M as a center and BM, that point is M, M as a center, and BM equals to MC is radius. We construct a circle over semicircle. So taking M as the center and BM which is equals to MC is a radius. Okay. So now construct a semicircle or circle. Okay. So taking M as the center and that BM is the radius, we will construct a circle. आपको क्या बनाना है? एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करना है. So we will make here a circle. Now that circle intersect the AC at point D. Now we will join B to D and D to C. क्या ज्वाइन करवाया है आपने? इन स्टेप 4 दिस सर्किल intersect the AC at point D. Now angle BDC is equals to 90. Reason
angle in semicircle or not? Angle in semicircle. So BD is the perpendicular on AC or not? Up to here work complete. BC क्या किया है आपने AC पे perpendicular ड्रॉ किया. After that the circle through BCD is drawn. BCD से क्या आपने एक सर्किल ड्रॉन कर दिया. After that construct the tangent from point A to this circle. So here AB is already a tangent or not? Now next work we will draw the another tangent also. So ये case आपका same है. That point is present outside the circle. Then how we will draw tangents? Firstly, that point we will join the center of the circle. So in next step में क्या करना है आपको? We will join point A to point M. Understand? Join point A to point M. That is the step number 5th. So in step 5th, join A to M and draw perpendicular bisector of AM. Now we will draw the perpendicular bisector of AM. Draw the perpendicular bisector of AM which intersect the AM at point P. Right? Perpendicular bisector of AM which intersect the AM at point P. Now next step, taking P as the center and AP is equals to PM is equals to radius. We will construct a new circle. Next step, step 6, taking P as a center and AP equals to PM radius, construct a circle which intersect the given circle at two different point or not. वो क्या करेगा? Two different point पे intersect होगा. So taking P as the center and AP is the radius, we will construct a circle. Okay, एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करो. सो हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द सर्किल? सेंटर किसको कंसिडर करना है? P को कंसिडर करना है और PM AP के इक्वल है, उसको क्या कंसिडर करना है? रेडियस कंसिडर करना. नाउ ड्रॉ. कंपास निडल की कहाँ पे पुट करनी है? P पे, और AP इक्वल PM इक्वल क्या बनाना है आपको? रेडियस. एक सर्किल बनाना है. सो वी विल ड्रॉ ए सर्किल. नाउ ड्रॉ ए सर्किल. which intersect the given circle at that point. That is the point Q. वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा रहा है? पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करवा रहा है. कंस्ट्रक्ट ए सर्किल which intersects the circle at point Q. Join Q to A. अब क्या करना है आपको? पॉइंट Q को किससे ज्वाइन करवाना है? पॉइंट A से ज्वाइन करवाना है. तो ज्वाइन करवा दिया. सो AB एंड AQ आर द रिक्वायर्ड टू टेंजेंट्स. सो यहाँ पर रिक्वायर्ड टू टेंजेंट्स क्या होगी? सो AB एंड AQ आर रिक्वायर्ड टू टेंजेंट्स. Understand? Again, firstly we will construct a right angle triangle ABC. आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया है? राइट एंगल ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट किया, in which angle B is the 90 degree. In step second, we will draw the perpendicular bisector of BC. This perpendicular bisector of BC intersect the BC at point M. Next step, now taking M as the center and BM equal MC is radius, we will construct a circle
which intersect or which is passes from point B, D and C. Next step, now we will join point A to M. After joining the point A to M, we will draw the perpendicular bisector of AM. That perpendicular bisector of AM intersect at point P. After that, taking P as the center of the circle and AP equal PM is the radius of the circle, we will construct a new circle which intersect the given circle at two different points, point B and point Q. Now A to B already joined, so we will join A to Q. So here AB and AQ are the required two tangents. Understand? Now next question. In next question, if given to you angle between two tangents, then how we will construct the tangents. आपको two tangents के between angle given है, then how we will construct the tangent. Question is, draw a pair of tangents. Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle 60 degree. So we will construct a pair of tangent to a circle of radius is 5 centimeter which are inclined to each other at an angle 60 degree. Inclined to each other का meaning क्या है? Angle between two tangent is 60 degree given to. So for that, firstly we will draw its rough diagram. So rough diagram बनाओ इसका. A circle. From point P, we will draw two tangents. That point A, O, B. Angle is given to you 60. That angle is 90. That angle is also 90. So firstly, we will calculate the angle at the center. आप क्या calculate करोगे? Angle at the center calculate करोगे? So step first. In step first, draw a circle of radius 5 centimeter. Step second, now join, take a point A on circle and join O to A. A2 को क्या करवाया है? ज्वाइन करवाया है. आफ्टर दैट इन स्टेप थर्ड, मेजर कैलकुलेट एंगल एट द सेंटर. एंगल ए ओ बी. आपको क्या कैलकुलेट करना है? एंगल एट द सेंटर कैलकुलेट करना है. सो हाउ वी विल कैलकुलेट? इन quadrilateral AOBP using angle sum property, 90 plus angle AOB plus 90 plus 60 degree is equals to क्या बनेगा? 360. So angle AOB 180 plus 60 is equals to 360. So from here angle AOB 360 minus 240. What is the value of angle AOB? 120 degree. Welcome. Right? So we calculate that angle at the center क्या बनेगा? 120 degree बनेगा. ये angle कितना बनाना आपको? 120 degree. Now we will draw its fair sketch.
फिर डायग्राम में देखो, फर्स्टली वी विल कंस्ट्रक्ट ए सर्किल ऑफ रेडियस O and here we will take point A, that is 5 cm. We will construct a circle, then take a point A and join. After that, at point A we will make a right angle or not, because using theorem 10.1 क्या होता है, the radius and tangent both are perpendicular to each other, so we will draw here a 90 degree angle. And how we will draw here 90 degree angle? With the help of compass. That angle is 90 degree. After that, at the center of the circle we will make an angle 120 degree. यहाँ पे क्या बनाओगे, एंगल 120 बनाओ. 1 times 60, 2 times 120, then join. That angle is 100. So in next step, the ray of 120 degree angle intersect the circle at point B, which intersect the circle at point B. In next step, at the B, again we will construct an angle of 90 degree. So draw an angle 90 degree, which intersect the 90 degree of the A at point P, and then the angle between A and B is the 60 degree. So in step 4, the ray of 120 degree intersect the circle at point B. After that, next step क्या बनेगी इसकी, again draw the perpendicular or draw the right angle at point B. Now we will get the required point P, which is the intersection of two right angle at point A and at point B. That is your required diagram. ये क्या बना है आपका 90 डिग्री एंड दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री. स्टेप्स कंप्लीट कर लोगे. तो स्टेप्स में क्या किया है, फर्स्टली यू विल ड्रॉ द रफ डायग्राम बनाओ. बट इसमें ये देखो कि आपको क्वेश्चन में इन एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज गिवन टू यू ओवर एंगल एट द सेंटर इज गिवन टू यू. अगर आपको ये गिवन है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, देन फर्स्टली यू विल कैलकुलेट एंगल एट द सेंटर. बट डायरेक्टली ये गिवन है एंगल एट द सेंटर, देन देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द एंगल एट द सेंटर. सो स्टेप फर्स्ट में क्या किया है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ गिवन रेडियस. स्टेप 2 में नाउ वी विल ड्रॉ इट्स एनी रेडियस एंड एट द एंड पॉइंट वी विल मेक एन राइट एंगल. आपने क्या किया है, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म किया है. नेक्स्ट स्टेप, एट द सेंटर वी विल ऑल्सो ड्रॉ ए रिक्वायर्ड एंगल. Next step, that required angle ray intersect the circle at point B. Again at point B we will draw right angle. This intersect the AX at point P. So we will take that AX and AY both are intersecting to each other at point. So step 4 after step 5 क्या write करोगे, draw. In step 5, draw right angle at B which intersect at point which intersects at point P. Now tangent PA and PB are inclined at angle of 60 degree. Diagram complete, steps complete. Next work क्या है आपका, justification. So how we will justify that angle will come 60 degree or not. So next work क्या है, justification. So in justification how we will prove, justification में क्या प्रूफ करना है आपको, ये एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज
60 degree. So in justification, in quadrilateral PBOA using angle sum property, से क्या बनेगा, एंगल BPA प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAP is equals to 360 degree. Now PBPA we will calculate. What is the value of angle PBO? 90. That angle is 120. That angle is 90 is equals to 360 degree. Now we will calculate the value of angle BPA. So BPA equals to 360 minus 300, which will come BPA is equals to 60 degree. ये प्रूफ करना था आपको that the angle between two tangent is the 60 degree, और ये कैलकुलेट करना था, ये प्रूफ करना था कि टू टेंजेंट्स के जो बिटवीन एंगल होगा वो क्या बनेगा, आपका 60 डिग्री बनेगा. सो दैट इज द सेकेंड टाइप क्वेश्चन. ये है आपका टाइप सेकेंड ऑफ 11.2 एक्सरसाइज. अंडरस्टैंड. तो इसमें सेकेंड टाइप क्वेश्चन में टू टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या हो सकता है, दैट वन, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज गिवन टू यू, देन हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स. तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, फर्स्टली यू विल कैलकुलेट द एंगल एट द सेंटर. एंगल एट द सेंटर आपको कैलकुलेट करना होगा. सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल एट द सेंटर इज गिवन टू यू, देन how we will construct the pair of tangent. Directly construct a circle, then radius 90, angle given 90, यहाँ पे बनाओ, ये 90 बनाओ, इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या बनेगी, वो टेंजेंट बनेगी. सो क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है, एंगल एट द सेंटर इज गिवन टू यू और एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज गिवन टू. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सपोज you don't know then where is the center of the circle, then how we will find out the center of the circle. आपको क्या किया, एक सर्किल बना के दिया है बैंगल से. ओके, बैंगल की हेल्प से सर्किल कंस्ट्रक्ट कर लिया, बट यू डोंट नो दैट वेयर इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, देन हाउ वी विल फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्किल. सो नेक्स्ट टॉपिक, टू फाइंड center of circle. How we will find out the center of the circle if a circle is already given to you? So how we will find out? Firstly, that circle is drawn with the help of bangle. क्या किया है मैंने, बैंगल की हेल्प से ये सर्किल फॉर्म किया है. In that case we don't know that where is the center of the circle, then how we will find out the center of the circle? For that we will draw any two line segment. आपको क्या करना है, इसमें नॉन इंटरसेक्टिंग टू लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. दैट इज द कोड. स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ any two chord in given circle, that is non intersecting. Now draw. First chord is that AB, second is chord that C. फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, ड्रॉ एनी टू नॉन इंटरसेक्टिंग chord. Step second, now draw the perpendicular bisector of both chords. Draw the perpendicular bisector of
both the chords. These are the perpendicular bisector of both the chords. Step third, the point at which both perpendicular bisectors are meeting to each other. Is center of circle. Okay, here is that point at which both perpendicular bisectors are meeting to each other, or both perpendicular bisectors are intersecting to each other. That is the center of the circle. Understand? So how we will find out the center of the circle, student? Firstly, in a given circle, we will draw any two chords which are non-intersecting. Two non-intersecting chord आपने क्या किया है? Draw किया है. After that, draw the perpendicular bisector of both the chords. The point at which both chords are intersecting, both perpendicular bisectors are intersecting to each other. That point is the center of the circle. Understand? अब इस पे बेस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस टाइप से फॉर्म हो सकता है. Question: draw a circle with the help of instrument, or with the help of circular shape. Take a point P outside the circle and construct a pair of tangents to that circle. Draw a circle with the help of circular shape. Take a point P outside the circle and construct a pair of tangent to the circle. So here not given the radius of the circle, and here also not, we don't know then in circle where is the center of circle, because radius ही given नहीं है, तो आप किस मेजरमेंट का सर्किल बनाओगे? तो यहाँ पे सर्किल किससे बनाना है? बेंगल से बनाना है. आफ्टर दैट पॉइंट P की डिस्टेंस भी गिवन है सेंटर से, तो उसके लिए क्या करोगे? फर्स्टली वी विल ड्रॉ ए सर्किल विद द हेल्प ऑफ बेंगल. बेंगल की हेल्प से आपने एक सर्किल फॉर्म किया, बट वी डोंट नो वेयर इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. तो उसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? यू विल ड्रॉ एनी टू कॉर्ड्स ए बी सी डी. वी विल ड्रॉ एनी टू कॉर्ड. नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर bisector of both the chords. Perpendicular bisector. At that point O, both perpendicular bisectors are intersecting to each other. That is the center. अब क्या करना है? डिस्टेंस गिवन नहीं है. You will take any distance. Here point P with outside the center. वर्क रिपीट करना है. क्या करना है आपको? नेक्स्ट स्टेप, draw the perpendicular bisector of OP. Draw the perpendicular OP which intersect the OP at point M, taking M as the center and OM equal MP is the radius. We will draw a circle. So we will construct another circle which intersect the given circle at two different points. First point is that and second point is that. Point X and point Y. Now to find or to draw the pair of tangent, we will join point P to X and point P to Y. Then Px and Py
are the required two tangents. Understand? So here px and py are the required two tangents. Work student same है, but इसमें different क्या है? How we will find out the center of the circle. पहले आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना था. आफ्टर फाइंडिंग आउट द सेंटर द क्वेश्चन इज सेम एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर. अंडरस्टैंड? नाउ in division of line segment, if ratio is given to you 3:5, then the rate divided ax into how many parts? 3:5. 3 plus 5 divides into 8 parts. Understand? So जो वर्कशीट होगी चैप्टर 11 की, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आप फाइंड आउट करोगे. जनरली इफ रेशियो इज गिवन देन हाउ मैनी पार्ट्स द रे इज डिवाइडेड. Our second, what is the angle between them? Our third type question, that we will join which point to the last point. So that is the all about of chapter 11 construction. So if we will summarize the chapter 11 construction, so construction में क्या study किया है? First, how we will divide a line segment in the given ratio. Second, how we will construct a pair of tangent if point is present on the boundary of the circle and if point is present outside the circle. Third type question, if the angle between tangents is given to you, or if the angle at the center is given to you, then how we will construct a pair of tangent from that point. Okay, in next class we will discuss of chapter 12 area related to circle. Thank you.